Dear students, this is Imran Kazmi. We are going to start programming fundamentals. What is a program? A program is a set of instructions given to the computer which when executed perform the desired task. Program is nothing more than a set of instructions. हमें बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करवाना है और उसे अपनी मर्जी से अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कराना है. Computer is basically a machine. Computer has no IQ. For every single task, we have to instruct computer. But instructions computer को देने के लिए we must write these instructions in some programming language. Because without language, we cannot instruct computers. We have different levels of programming languages. Low level languages, middle level languages and high level languages. Low level languages are basically ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें आप जीरो एंड वंस में कोडिंग करते हैं. मशीन लेवल लैंग्वेजेस मोस्टली इनको कहा जाता है और इसमें जीरोस और वन डिजिट्स का बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है. और ये लेवल ऐसा है लैंग्वेज का दैट इज सो डिफिकल्ट जिसमें इंस्ट्रक्शंस देनी जो है वो बहुत मुश्किल है और इसमें एरर फाइंडिंग भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. सो प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेजेस इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट एंड यू कैनॉट गिव इंस्ट्रक्शंस इन लो लेवल लैंग्वेजेस. ऑन द अदर हैंड वी हैव मिडल लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस की मुश्किलात को देखते हुए मिडल लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग को जो है वो प्रेफर किया जाता है. इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स लाइक ऐड, सम, मूव और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. मिडल लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जैसा कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस में किया जा सकता है. अब अगर आपने प्रोग्राम मिडल लेवल लैंग्वेज में लिखा है देन यू नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. अब उसके लिए आपको जो ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड असेंबलर. असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम को जो आपने मिडल लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ताकि वो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो जाए और मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके. अगर आपने प्रोग्राम मिडल लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो प्रोग्राम भी आपके लिए जो है वो इतना इजी नहीं होता और उसमें जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जो डाटा स्टोर करती है वो कंप्यूटर रजिस्टर्स में करती है और रजिस्टर जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट होते हैं. इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल नहीं होता. मीन आपने जिस मशीन के लिए उसे डेवलप किया है वो सिर्फ उसी मशीन में जो है वो इस्तेमाल हो सकता है. सो वी हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट इवन ऑन मिडल लेवल लैंग्वेज. सो दैट इज व्हाई वी मूव टू हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन के लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है बट दीज आर गुड फॉर ह्यूमन बिकॉज इसमें ह्यूमन लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया और इसमें ह्यूमन लैंग्वेजेस की जो वर्डिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज व्हाई दे आर गुड फॉर ह्यूमंस और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू मिडल लेवल या लो लेवल. On the other hand, they are portable because they are not machine dependent. आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बाद उसे किसी भी मशीन पे जो है वो रन किया जा सकता है. इसलिए जो प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसिडर की जाती हैं दैट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. वी हैव नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लाइक C++, Java, Pascal, Cabol and Fortran for programming.
These languages use human words and vocabulary to program the computers. Same is the case with high-level languages. High-level languages cannot be directly executed by the machine. The program written in high-level languages must be translated into low-level languages so that it can be run on the machine. So we need certain translators to convert the program written in high-level language into low-level language. Translator. Translator is a software which is used to translate the program written in high-level language into low-level language or machine language. Three types of translators are there: compiler, interpreter, and assembler. Compiler and interpreter are basically used to convert the program written in high-level language into machine-level language. Both are the translators, but their working is different. Compiler convert whole program into machine-level language, whereas interpreter translate instructions one by one from the source code to the object code. So, compiler is considered to be the good software or either fast software to translate the instructions written in high-level language into low-level language as compared to interpreter, because interpreter translates instruction by instructions and the speed of the interpreter is slow as compared to compiler. So mostly high-level languages now consider compiler as compared to interpreter. जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली लैंग्वेज के बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इसका जो तरीकाकार होता है लर्निंग का, उसमें अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंसेस एंड देन पैराग्राफ्स आते हैं. एंड सिमिलरली जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, देन कांस्टेंट वेरिएबल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम. दोनों के साइकिल को अगर आप कंसिडर करें, देखें आपके सामने है, तो इसमें आपका जो फ्लो ऑफ और यू कैन से द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम. जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम नेचुरल लैंग्वेज से या नेचुरल वे से जब हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर पाएंगे. तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए ये एक थोड़ी सी एफर्ट की है, इसमें बेसिकली मैंने इसी नेचुरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया एंड वी वुड फॉलो द सेम स्टेप्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस एज वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज. So you wouldn't find any difficulty to learn high level language like C++. Any type of high level languages, we have four basic types of instructions. Whether you are using C++, you are using Java, you are using COBOL, Pascal or any other language, we have basically four types of instructions: type declaration instructions, arithmetic instructions, input-output instructions, and control instructions. So the method of our learning would be, first we would start from type declaration instructions, then arithmetic instructions, then we would go to input output instruction and then control instruction. One by one we would use type of instructions and then we would have some examples of that type of instructions and the natural flow would go from 1 to 4. Type declaration instructions. Type declaration instructions
For understanding of type declaration instruction, a little bit computer process you must understand. You must know the term memory, RAM. Data before processing and after processing goes to memory, and different types of data require different memory space. जब हम कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करवाना होता है तो वी नीड स्पेस इन मेमोरी. अब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं दैट आर आल्सो टेम्परेरीली स्टोर्ड इन मेमोरी, सो वी नीड मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग एज वेल एज आफ्टर प्रोसेसिंग. तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर डिफरेंट मेमोरी और टेक डिफरेंट मेमोरी स्पेस. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म इंटीजर जिसका क्वालिफायर इंट होता है, ये 2 बाइट्स लेता है. फ्लोट, इसका क्वालिफायर फ्लोट होता है और 4 बाइट्स लेता है. एंड सिमिलरली करैक्टर डाटा, 1 करैक्टर डाटा टेक्स 1 बाइट और इसका क्वालिफायर करैक्टर होता है. यहाँ पे एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन नीडेड है. मोस्टली जो नए मॉडर्न आपके जो कंपाइलर्स हैं वो इंटीजर के लिए 4 बाइट रिजर्व करते हैं एक इंटीजर वैल्यू के लिए. लेकिन आपकी आसानी के लिए इफ़ यू वांट टू नो कि जी एक इंटीजर वैल्यू कितने बाइट्स ले रही है, तो उसके लिए आपके पास सिंपल मेथड ये है कि आप साइज ऑफ और आगे इंट लिखें, तो जितना उस मशीन में जितने बाइट्स जो है वो रिजर्व किए जा रहे होंगे उतने आपको रिटर्न करते हैं. तो अगर आप साइज ऑफ इंट लिखते हैं तो 2 बाइट आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट रिजर्व कर रहा है. और सम टाइम जो न्यू सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपका साइज ऑफ इंट लिखेंगे तो 4 बाइट. एक्चुअली आई वांट टू से कि अबाउट इंटीजर वी हैव 2 बाइट्स एंड 4 बाइट्स, but you can confirm on your machine by using size of operator and you would know कि आपकी present machine जो है वो एक integer value के लिए 2 बाइट ले रही है या float बाइट 4 बाइट्स ले रही है. लेकिन float और character के लिए ये चीज़ already confirm है कि एक float value 4 बाइट लेगी और एक character value 1 बाइट लेगी. लेकिन इन पे भी आप size of operator का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की बात करें, वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज whose values can be changed throughout the program. Actually, programming में variables are the spaces where values can be changed. Memory spaces की बात हो रही है. तो वेरिएबल्स जब हम वर्ड यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में तो इसका मतलब ये होगा कि हम मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व करेंगे और उस रिजर्व स्पेस पे वैल्यू चेंज हो सकती है. एंड कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यूज, दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज. सो सेम वी आर यूजिंग अ मेमोरी स्पेस वेयर यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज. सो व्हाइल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट in context with programming language, so you must know अगर हम वेरिएबल इंटीजर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी मेमोरी स्पेसेस जहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, और अगर हम कांस्टेंट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ऐसी मेमोरी स्पेसेस जहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती. जब प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का जिक्र करते हैं तो उसके लिए वी नीड 4 things to know. First, the name of the variable. Second, its type. Third, size. And fourth, value. To give a name of a variable, we have certain rules that must be followed. Type declare the type of the variable, whether it is integer, float, character, or whatever. Similarly, size mean how many bytes it is going to reserve, and the value, what is value is going to be assigned to a variable. Keywords. Keywords are those words whose meanings are already defined to the compiler
We cannot assign new meaning to them. These words are reserved for some specific tasks and cannot be used as variable names. For example, int, that is basically used to declare an integer variable. Short is also a type of integer. Signed, unsigned, default, volatile, float, long, double. These are all the keywords, and you cannot use them as variable names, and you cannot assign any other function to these keywords. So let's conclude the term type declaration instruction. Declaration of variable specify its name, data type, range of the value that variable can store depend upon its data type. For example, if you say int a, mean the variable a is of type int and it is going to reserve 2 bytes for you. Similarly, character c, the variable c is type of character and it is going to reserve 1 byte for you. And when you are talking about the term float f, it means that you are having a float variable f, and f is going to assign or take 4 bytes in memory. So int a, character c, float f in a program, 2 bytes for a, 1 byte for c, and 4 bytes for float. So in this way you would have 7 bytes. These 7 bytes can be used to store data temporarily in memory. So whenever you need data, you need to declare the variable so that the space is reserved in the memory, ताकि डाटा बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग उस स्पेस पे स्टोर हो सके और आप उसे इस्तेमाल कर सकें. In case you want to know the variable of type int store how many bytes or take how many bytes, so you can use the operator size of to know, because some machines take 2 bytes and some take 4 bytes. So by using size of int, you would better know how many types or how many bytes are going to be reserved in your machine. So size of int would return either 2 or 4. Most probably it would return 2 bytes. So at this stage we have completed type declaration instructions that are basically used to declare the type of the instruction, type of the data you are going to use in your program. Because अगर आप उसकी टाइप नहीं बताते तो वो आपको नहीं बता सकेगा, वो आपके लिए मेमोरी रिजर्व नहीं कर सकेगा. तो memory reservation is required to store data in the memory. The second type of instruction is arithmetic instructions. Arithmetic instructions are used for calculation purpose. These instructions are formed by using arithmetic operators and assignment operator. Arithmetic operators, these operators are used for numeric calculation. These are of either use unary arithmetic operators or binary arithmetic operators. Unary arithmetic operators ऐसे arithmetic operators होते हैं that require only one operand. For example, plus plus है, this is incremental operator, and minus minus decrement operator. ये ऐसे operators हैं जिनको just एक operand की ज़रूरत होती है. While on the other hand, हमारे पास plus, minus, multiplication, division and mod operators available हैं. ये ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है कैलकुलेशन पर्पस के लिए. इनमें से प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन मॉड ऑपरेटर, इसको परसेंटेज ऑपरेटर हरगिज ना कहिएगा, बिकॉज दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर और ये परसेंटेज रिटर्न नहीं करता, ये आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है. लेट्स से कि आप जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हुए आपके पास
एक चीज होती है कोशेंट और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर ऐसी अमाउंट होती है जो बच जाती है, जिसको फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में मॉड ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, जिसको फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते। इसमें एक चीज और आपके लिए जाननी जरूरी है, और वो ये है कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर फ्लोट वैल्यू पे अप्लाई नहीं हो सकता। आप इसे हमेशा इंटीजर वैल्यूज पे इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये बात भी आपके लिए जाननी जरूरी है कि जब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, और एक फ्लोट दूसरे फ्लोट से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आता है। लेकिन अगर आप एक इंटीजर और एक फ्लोट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं तो इन दैट केस अगेन रिजल्ट वुड बी फ्लोट। सो यू मस्ट नो इंटीजर इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, इंटीजर फ्लोट से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट फ्लोट आएगा, फ्लोट इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट फ्लोट आएगा, एंड फ्लोट फ्लोट से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो भी रिजल्ट फ्लोट आएगा। There is only one case for integer result, and that is when both operands are of type integer. So modulus operator is basically used when both the operands are integer. You cannot apply it on float values. Second thing is assignment operator. Assignment operator equal to is basically used to assign values. Operand on the left hand side should be a variable, and the operand on the right hand side should be variable or constant or any other expression. लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का होना जरूरी है, और राइट हैंड साइड पे आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं और वेरिएबल भी ले सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, sum is equal to x plus y plus z, so sum must be a variable. On the other hand, x, y और z can be variable or constants. और इसमें एक और बात बतानी जरूरी है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे या असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल की गुंजाइश है, आप एक से ज्यादा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रख सकते। While on the right hand side you can have number of variables or any expression, जो भी उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो इस सिंगल वेरिएबल को असाइन होगा। लेकिन इसमें एक और चीज भी जाननी जरूरी है कि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इनका प्रेसिडेंस जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया या डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी चाहें आप इन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करें। रादर यू हैव टू फॉलो सम प्रेसिडेंस रूल्स। जैसा कि अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में से पैरेंथेसिस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, एंड द नेक्स्ट लेवल इज स्टैरिक स्लैश एंड मॉड। और अगर उस इक्वेशन में स्टैरिक स्लैश और मॉड मौजूद हैं तो आप सेकंड प्रायोरिटी पे इन तीनों ऑपरेटर्स को सॉर्ट आउट करेंगे, एंड फिर एट द लास्ट जो आपके पास चीज बच जाती है, अगर उसमें प्लस और माइनस मौजूद है तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे आप प्लस और माइनस को एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्रेसिडेंस के हवाले से हमारे पास तीन लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल पे आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, सेकंड लेवल पे आप स्टैरिक स्लैश और मल्टीप्लिकेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, एंड लोएस्ट लेवल पे आप प्लस और माइनस को सॉर्ट आउट करेंगे। और इसमें एक और चीज भी जाननी जरूरी है कि अगर आपके पास सेकंड लेवल पे स्टैरिक स्लैश और मॉड ऑपरेटर है तो इनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हमेशा पहले स्टैरिक एग्जीक्यूट होगा, रादर इन तीनों में से जो पहले आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टैरिक लेफ्ट टू राइट में से पहले आ रहा है तो पहले स्टैरिक एग्जीक्यूट होगा,
लेकिन अगर मॉड पहले आ रहा है तो पहले मॉड एग्जीक्यूट होगा। सो आपने एक्सप्रेशन में देखना है कि आपके पास पहले कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, आप पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे उसकी प्रायोरिटी सेम भी क्यों ना हो। सिमिलरली अगर आप लोएस्ट लेवल पे जाते हैं और आपके पास एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस बात जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आपने पहले प्लस एग्जीक्यूट करना है और फिर माइनस। रादर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा, अगर माइनस पहले आ जाता है तो आप पहले माइनस को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर पहले प्लस आ जाता है तो पहले प्लस को एग्जीक्यूट करेंगे। वी हैव अ सॉल्व्ड एग्जांपल ओवर हियर, जिसमें मैंने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया आपके सामने, k is equal to 2 multiplied by 3 slash 4 plus 4 slash 4 plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। तो एज पर प्रेसिडेंस रूल सबसे पहले हम स्टैरिक स्लैश को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, सो द रिजल्ट वुड बी 6। सो ऑन द सेकंड स्टेप वी हैव 6 divided by 4 plus 4 divided by 4 plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो सबसे पहले 6 divided by 4 आ रहा है, तो दोनों ऑपरेंड्स आपके इंटीजर हैं, द रिजल्ट वुड बी इंटीजर। सो वी वुड नॉट गो इन द डेसिमल पॉइंट, रादर वी वुड डिवाइड 6 over 4 and we have result 1, बिकॉज इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट आपके पास इंटीजर आता है। द रिजल्ट इज 1। द सेम एक्सप्रेशन इज देयर, 1 plus 4 by 4 plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। Now the second step is we are not going to sort out plus, rather again we would focus on 4 by 4। 4 by 4 would result into 1 and then the same expression plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। अगर आप इसकी बात करें तो इस स्टेज पे पहुंच के हमारे पास सारे प्लस और माइनस हैं एक्सेप्ट 5 divided by 8। सो हम पूरा एक्सप्रेशन छोड़ के एंड पे आके 5 divided by 8 को सॉर्ट आउट करेंगे एंड द रिजल्ट वुड बी 0, बिकॉज इंटीजर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट आपके पास इंटीजर आता है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, रादर द 0 वुड बी द रिजल्ट। So now we have the expression 1 plus 1 plus 8 minus 2 plus 0। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले प्लस आ रहा है, so we would solve 1 plus 1 that is 2, then plus 2 plus 8 minus 2 plus 0। अब 2 plus 8 equal to 10 minus 2 plus 0। Now 10 minus 2 equal to 8 plus 0 and that is 8। So in this way हम arithmetic instructions को प्लान करेंगे कि हमने ये इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है कि जो उसकी प्रेसिडेंस दी हुई है, लेवल्स दिए हुए हैं, उसके मुताबिक वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें उन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस डेवलप करते वक्त उन लेवल्स का ख्याल ज़रूर रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग से सिर्फ इस वजह से भाग जाते हैं कि शुरू में वो समझते हैं कि इट्स क्वाइट इजी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ से ये चीज़ें बाहर होती चली जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वो बेसिक्स पे फोकस नहीं करते और चीज़ को एज इट इज़ ले लेते हैं और कल पे छोड़ देते हैं कि कल इसको देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नेक्स्ट डे देख लेंगे, और फिर ऐसी चीज़ें पेंडिंग चलती रहती। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आज तक हमने इतने सालों से हम अपने कोर्सेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपने एजुकेशनल सिस्टम में इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन आज तक हम इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो सके इस इंग्लिश लैंग्वेज पे। उसकी वजह ये नहीं कि हमें किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया नहीं या हमने अच्छे कोर्स को फॉलो नहीं किया। उसकी वजह सिंपल ये है कि हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, और जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, उस वक्त तक आप लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो चाहे आप 16 ईयर्स 20 ईयर्स जितने भी ईयर्स आप उसे पढ़ते रहेंगे, तो आप सिर्फ पढ़ने की हद तक चीज़ों को समझेंगे, आप बोल नहीं सकेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि एक
मिडिल स्टैंडर्ड स्टूडेंट जब कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो 6 मंथ्स के बाद वापस आता है तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है। उसकी वजह यही है कि वो वहां पे मजबूरन बोलता है और बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के फिर उसे समझ भी जाता है और बोलना शुरू भी कर देता है। तो यहाँ पे हम पढ़ाते रहते हैं और बच्चे अपने पूरे करियर में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते रहते हैं, बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश इवन, तो वो इंग्लिश बोल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि लैंग्वेज पढ़ने से या लिखने से नहीं आती, लैंग्वेज इस्तेमाल करने से आपको आती है। तो अगर सिमिलरली आप प्रोफिशिएंसी की बात करें, आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो प्रोग्रामिंग पढ़ने से नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग करने से आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस पे खुद से काम करेंगे, उतनी प्रोग्रामिंग आपकी बेहतर होगी। तो अगर आप प्रोग्रामिंग को पढ़ने की हद तक लेंगे तो कभी भी आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग खुद से करनी होगी। जब तक आप प्रोग्रामिंग खुद से नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। थैंक यू वेरी मच।